what is a column? So column is a vertical member whose effective length is greater than 3 times its least lateral dimension. Carrying compressive load is called as a column. Column transfer the load from the beams or slabs to the footings or foundations. And the inclined member carrying compressive loads, as in the case of frames, trusses, is called struts. So the pedestal is a vertical compression member whose effective length is less than 3. अगर कोई कॉलम है जिसकी लेंथ इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब d into d जो होता है डायमेंशन ऑफ द लीस्ट लेटरल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है में जो सबसे कम डायमेंशन है उससे अगर 3 टाइम्स नहीं है तो वो से हम कहते हैं वी कॉल इट पेडेस्टल. और अगर इसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है जैसे लीस्ट लेटरल डायमेंशन से, तो उसको हम कहते हैं कॉलम. ठीक है, डिफरेंस है दोनों के बीच का. व्हाट इज अ कॉलम, व्हाट डू वी कॉल एज पेडेस्टल. So the column is a structure that carry loads from the beam and slabs down to the foundations, and therefore they are primarily compression members, although they may also have to resist bending forces due to continuity of the structure.